हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और हम करने जा रहे हैं आज फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने जा रहे हैं। हमने बेसिकली अपने पुराने लेक्चर में मोंगोडीबी से अपने यूजर को रजिस्टर करवाया था और उसको लॉगिन भी करवा के देखा था। आई शो यू राइट नाउ। इसमें हमने हैशिंग सीखी थी, कंपेयर किया था bcrypt और JWT वेब टोकन का यूज हमने किया था। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये सब तो हम कर रहे थे सिर्फ index.js या server.js फाइल में, जो कि मेरी बैकएंड की फाइल होती है। Now, if you see, my backend tool is here. So I'll open in front of you. Okay. I hope you can see my screen. ठीक है। तो बैकएंड की फाइल को अगर मैं खोलता हूँ तो मैं बेसिक खोलने का जो तरीका है मेरा, बहुत बेसिक तरीके से चला हूँ। और ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए भी है जो बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। तो अभी तुम देखना चाहोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, राइट? यू गेटिंग इट राइट? ओके। प्लीज गिव मी अ सेकंड। एंड इफ आई राइट समथिंग लाइक comms and click on this send, user doesn't exist, please log in. So you cannot do the this one, क्योंकि लूफी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए देखो, अगर मैं गेट करता हूँ और यहाँ पर यूजर्स लिखता हूँ और सेंड करता हूँ, यू सी देयर आर मेंबर्स। सो मंकी डी लूफी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ, इसको पोस्ट करता हूँ, और जब मंकी डी लूफी जा रहा है तो वो मुझे क्या देता है? एक टोकन देता है। यहाँ तक हमने किया था, रजिस्ट्रेशन भी हमने करवा दिया था। दैट इज रियली ठीक है, इजी। अब इसको फ्रंट एंड से करने के लिए मुझे एक चीज ध्यान रखनी है। वो चीज क्या ध्यान रखनी होती है? वो चीज मुझे ध्यान रखनी होती है कि अभी के लिए हम क्या करेंगे। देखो, ये एडवांस चीजें हैं, हम उसको बाद में करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हर बार मैं अपना बैकएंड खुला नहीं रख सकता, अभी तो मैं खुला रख सकता हूँ, राइट? तो बाद में हम इसको रेंटर पे या कहीं ऐसी जगह पे जहां पर ये बैकएंड हमारा लाइव चलता रहे, हम इसको वहां डिप्लॉय कर देंगे। तो अभी के लिए सुनो। जैसे ही मैंने इसको एचटीटीपी लोकल लॉस लॉगिन है, ठीक है, मेरे पास दो रिक्वेस्ट हैं। एक रिक्वेस्ट ये रही और एक रिक्वेस्ट है रजिस्टर की। ठीक है। यस। नाउ ओके, देयर इज समथिंग रिकॉर्डिंग, फाइन। वी हैव टू गो टू आवर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जाने के लिए मैं इसको डाउन जाऊंगा। ये रहा मेरा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को खोलते हैं। ये मेरा शो मोर ऑप्शन, ये मैं गया ओपन विद कोड, एंड नाउ योर फ्रंट एंड इज है। ठीक है। आई होप तुम सबको बेसिक फॉर्म बनाना आ गया होगा। ठीक है, क्या किस तरीके से होता है, सब कुछ क्या कैसे होता है। जिसको बेसिक फॉर्म बनाना नहीं है, रिएक्ट हुक फॉर्म, ही कैन गो चेक इट आउट माय वीडियोस। तो मैं रिएक्ट हुक फॉर्म सिखाया था, बहुत अच्छा था। आई ऑल्सो लाइक इट। बट अभी सिखाने के टाइम में I'll go here। ठीक है। इसको पहले npm run dev करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मैं लूंगा हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, मुझे एक अच्छा सा लॉगिन देगा, यूआई। ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ यूआई डेवलपर। किसी भी कंपनी में कई सारे डेवलपर्स होते हैं, डेवऑप्स, यूएक्स यूआई, यूएक्स यूआई, फ्रंट एंड, बैक एंड, एटलीस्ट 5 या 6। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो मान के चलो। तो ये सारे के सारे डेवलपर मैं सब नहीं हूँ, राइट? आई एम अ फुल स्टैक। सो आई ओनली नो द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो यूआई यूएक्स के लिए मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा एंड अलास चैट जीपीटी pass me a cute looking login registration registration component। मैं डायरेक्ट नहीं पे लिख रहा हूँ। pass me a component which will have name, email, and password. Make all the states proper and give me handler also to submit the form। ओके, तो चैट जीपीटी जब तक देता है हम चलते हैं। तो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। तो मैं इसको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर ला गया एंड
Main thing I'm using tailwind and मैं सिर्फ tailwind बोलता हूँ इससे, ठीक है। एग्जैक्टली, ओके। तो या रिएक्ट फॉर्म के बारे में मैंने पढ़ा था, टच रिक्वायर्ड, ऑन ब्लर एवरीथिंग मैंने पढ़ा था, ठीक है, हमने सिखाया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम होम पे से इसको हटाते हैं। तो मेरा ये रहा होम, ब्रो वी डोंट नीड यू, एग्जैक्टली वी आल्सो डोंट नीड यू। व्हाट विल बनो, हम क्या बनाएंगे रजिस्ट्रेशन करके। तो पेजेस के अंदर मैं एक नया पेज बनाता हूँ, दैट इज रजिस्टर रजिस्ट्रेशन डॉट टी एस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा आर एफ सी, एंटर। इसकी मुझे भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पता है रन कर रहा है। अब रजिस्ट्रेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास एक यूआई है जो मुझे दिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आई होप दिस विल वर्क। मैंने पास कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो अनडिफाइंड हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया। आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि तुम्हें नहीं बताऊंगा, बताना पड़ेगा ब्रो मैंने, मुझे। यू स्टेट खत्म, यस। तो अभी हम मैक्सिमम यूज करेंगे एनी का। मैं टाइपस्क्रिप्ट की भी सीरीज लेने की सोच रहा था कि मैं टाइपस्क्रिप्ट सिखा सकूं, वरना अभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है ना, मुझे मत सिखाया। एंड हो गया। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। क्या है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, जो भी है। विल गो टू होम, विल सेट इट हियर, विल डू इट हियर लाइक दिस, ऐसे, एंड एंटर एंड ऐसे। लेट्स गो टू माय VS कोड एंड हियर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज प्रीटी ऑसम। That is literally, man, that is amazing. So ChatGPT can do this much of work. Okay, so you should use ChatGPT also. Submit करने पर I'm not getting this one. So @email.com. So I'm getting everything right. Great. Now what I have to do? अब मुझे करना क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। हाँ भाई, रजिस्ट्रेशन इज दिस। इस रजिस्ट्रेशन में तुम देखोगे यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं जस्ट कुछ इस तरीके से, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे फोटो लूं और एक स्क्रीनशॉट तो बनता है क्रॉस, पॉज ऐसा नहीं, वेट, अच्छी, एक सेकेंड, ग्रेट, एक स्क्रीनशॉट ये रहा। ओ मैन, ओके। सो हट, नहीं अच्छा नहीं लग रहा यार, लड़कों को पोज देना क्यों नहीं आता, मैं तो साइड फेस ही बेटर है, राइट। तो ये वाला मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं कह रहा था, तो मैं पहले मैं कोड समझाता हूँ, ठीक है। कोड में देखो कुछ नहीं है, एक फॉर्म डेटा है जिसमें नेम ईमेल है, ठीक है। सबसे पहले हमने तीनों को क्या किया, सेट किया है, तीनों के स्टेट लिए। इस स्टेट को हमने यहाँ पुट किया है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पुट करने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही सबमिट बटन करते हो आप सबकी वैल्यूज से क्या हो गए। ऑन चेंज का जो सिस्टम है वो सेट ने मैंने यहाँ लगाया। किसी को भी अगर स्टेट्स में प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू अगेन, इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम विद स्टेट्स, यूज स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, प्लीज 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 गो टू माई रिएक्ट सीरीज। 19 लेक्चर्स हैं, 18 सेक्शंस होंगे,
वहां पर जाके यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, इनको पढ़ लो अच्छे से, ताकि मुझे तुम्हें ये चीजें ना बतानी पड़े। ठीक है, वंस यू विल रीड इट यू विल बी एबल टू मेक इट। और देखो, बेस्ट इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, मैंने समझाया, समझो। ठीक है, यू हैव द कोड राइट, यू हैव एवरीथिंग। दुनिया भर में अगर तुम्हें एक हैंडल सबमिट करके देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या, अब तुम कहोगे मैंने कोड नहीं दिखा, राइट, बट तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैंने तीन चीज लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक किया, फॉर्म सबमिटेड आ गया, जो भी लिखा हुआ वैल्यू आ गई। इस चीज को अचीव करने की कोशिश करो। देखो, फंक्शनैलिटी मैं समझाऊंगा, करना क्या है मैं समझाऊंगा, बट अगर मैं एक एक चीज समझाता रहा कि नेम कैसे लाया जाएगा, ईमेल कैसे चलाया जाएगा, इट विल टेक अ डेज, बहुत दिन लग जाएंगे। समझ रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर कि हम फ्रंट एंड से बैक एंड, हमारा टॉपिक ये है, हमारा टॉपिक ये नहीं कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। तुम्हें अगर फॉर्म समझना है तो मेरे 4 घंटे की एक लेक्चर है, वहां पे जाके देखो, वो अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीच बीच में भावनाओं में बह जाता हूँ। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे कि मुझे फॉर्म सबमिशन मिल रहा है, यस, ओके, आई हैव अ फॉर्म सबमिट, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कॉल करनी पड़ेगी एपीआई कॉल, और एपीआई कॉल दो तरीके से होती है, डॉट देन लगा के, पैच समथिंग, और एक्सियोस लगा के। तो मुझे एक्सियोस पसंद है, तो मैं एक्सियोस का यूज करूंगा, सबसे बेस्ट होती है, और बहुत से लोग एक्सियोस यूज करते हैं, क्योंकि एक्सियोस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट। भाई जल्दी कर, ये रहा एनपीएम आए, पूरा करके जाऊंगा, देखना एक्सियोस। जब आप एक्सियोस ले लोगे ना, ये आपने एक्सियोस ले लिया, इंस्टॉल हो गया, नीचे जाओ, यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे लिखोगे क्या आप, तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ठीक है? गिव मी सेकेंड, ठीक है। हैंडल सबमिट में प्रिवेंट डिफॉल्ट है, मेरे पास वैल्यू है फॉर्म डेटा की, तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। ट्राई कैच ब्लॉक क्यों लगाते हैं सबको पता है ना? कंसोल डॉट लॉग यहाँ रखते हैं, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CLG एरर। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, हम एग्जिस्ट को कॉल करेंगे, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, अवेट एग्जीक्यूट डॉट पोस्ट, सिंपल लिखा, खत्म। अब एक्सियल को इंस्टॉल कर लो एक्सियोस से, ए सिंक आया हुआ है तुम्हारा, तो भाई ए सिंक को दे दो, दे दिया। एक्सिक्यूट डॉट पोस्ट, बाहर सी बात है वो कुछ मांगेगा, तो ये दे दो, कॉमा, कॉमा, ये दे दो, खुश हो गया भाई वो। अब इसको देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो मैं क्या ले सकता हूँ, फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर लिंक चाहिए, तो लिंक के लिए क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम यहाँ अपने इसमें जाओगे, इसमें तो नहीं जाएगा, ठीक है, चलते हैं फिर से बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड में अगर तुम गए, अरे आजा, तो ये रहा लिंक। लॉगिन ही पहले मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर, ठीक है, तो हम सर्वर डॉट जेएस में जाते हैं, लॉगिन से पहले क्या, रजिस्टर, एग्जैक्टली यही है। इसको कॉपी कर लो, मेक श्योर कि तुम्हारा ये रन करना चाहिए, सर्वर तुम्हारा चलना चाहिए। रन किया, यूजर करेक्ट, काम कर रहा है। विल गो टू आवर रजिस्ट्रेशन पॉइंट, यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया, बस इतना लिखना मुझे, HTTP लोकल होस्ट स्लैश रजिस्टर, सिंपल। हाँ, तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया, फॉर्म डेटा हो गया, रिस्पॉन्स आया, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को यहाँ डालता हूँ, डॉट डेटा, ठीक है, ये मैंने लिया, खत्म बात। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीट, ओके, सो इफ आई राइट SSC ईमेल, ये डालते हैं 1 2 3, सबमिट करता हूँ। सी दिस इज गिविंग मी एन एरर, Axios is throwing an error, okay, so what it is throwing, कुछ मैसेज है, नेटवर्क एरर। लेट्स गो हेयर,
There is some error, man. There is some error. Okay. What it could be? अब हम प्रॉपर डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। सचिन पांडे, ये sac@gmail.com, SACHIN@123। तो विल गो टू द नेटवर्क। अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखो ये एक और एरर दे रहा है। मैन इट्स गोना बी अ पेन। ओके, ओके। नाउ वंस आई क्लिक ऑन दिस सबमिट, आई एम गेटिंग दिस course error। लेट्स सी पेलोड क्या गया। पेलोड इज गोइंग परफेक्टली। रेस्पॉन्स क्या गया, प्रीव्यू एड्रेस में देखते हैं। HTTP लोकल होस्ट 3000 इतना आ गया। स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, ओके। यस मैन, सॉरी। कॉर्स क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन समथिंग एरर होता है। ओके, तो ओके, तो हम क्या करते हैं ना, बैकएंड को अलाउ करते हैं कॉर्स के लिए। समझे कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ जाओ, कॉर्स एरर। अच्छा, तुम्हें कॉर्स उसके बारे में अलग से डिटेल बनाएंगे, ठीक है। देख के नहीं रहे। कॉर्स मेरा इंस्टॉल हो गया। वी कैन चेक इन अ पैकेज डॉट जेसन। आई थिंक, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। आई थिंक वी हैव कॉर्स, राइट। एग्जैक्टली। नाउ विल गो टू द सर्वर डॉट जेएस। ओके, एंड हम डालेंगे, एक लाइन यूज करनी है क्या, यहाँ पर ऐप डॉट यूज के बाद ऐप डॉट यूज कॉर्स, सिंपल। तो जैसे ही आपने कॉर यूज किया, अभी आप यहाँ जाएंगे, ये करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, एंड यू सी दिस इज अ फेल, दैट इज अ नेटवर्क एरर। रिस्पॉन्स देखें क्या है, there is no response, payload was perfect, header was perfect, okay, we'll do this and we'll click on this again. Fail, that is a net, okay, I know. What could it be? ये नहीं भाई। यार ये क्या हो क्या रहा है, लेट मी क्लोज दिस, राइट। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। We'll go here, backend, we'll open it again, okay. There is some issue, I I don't know कि वो नहीं होना चाहिए था ऐसा, राइट। uh, just wait, PowerShell, right, npm run start से काम करना चाहिए। uh, start backend is working, okay, course is not even, man, I'm using this course, right, I installed it, but I didn't do it, did it what, जाहिर सी बात है मैंने इंपोर्ट नहीं किया। यार कितना गंदी बात है। course car प्लीज course course, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम जाएंगे, सो पोर्ट इज रनिंग एंड दिस इज कनेक्टेड, राइट। ओके, तो यहाँ चलते हैं अब और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। विल क्लिक ऑन इट एंड सी, यू कैन, you see, वेट, you got it right, your registration is successful and you have registered one user, that is 200, right. I don't care what it is, but it got registered. So what we registered, Sachin Pandey, sachin@gmail.com. Okay, now what we're gonna do, we're gonna repeat it. Okay, so I'm again getting responses. What a response is error response, duplicate key,
सो मुझे रिस्पॉन्स डुप्लीकेट का आ रहा है, बट ये 200 रिस्पॉन्स, यानी मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट हो चुकी है। ठीक है। ओके, स्टेटस कोड इज 400। करेक्ट, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर। इसे छोड़ो अभी। ये वाला नहीं। यस। ओके। ओके, सो you see, if I do the registration, it's giving me 200, but the response is saying that this is not possible. Okay, if I write Sachin SSC1, right, we'll think about this 200 and 400. It's fine. But if you click on it, now you see the response is duplicate key, mobile pattern. Mobile. Okay, we don't have a mobile man. We don't need it. Form submitted. We got this form submitted. Mobile is null, right? But why I'm getting this mobile is null? I think this one needs something called restartation, right? Let's see. Why it is throwing, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्या एरर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 200 500 का कुछ एरर है, या फिर ये इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है? ओए मैन। ओके, इंस्पेक्ट में आई ओपन अप दिस नेटवर्क। सचिन पांडे cc1@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9। You click on this submit. You got this registration responses. Okay, ओके, लेट्स सी। बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड राइट, सो ठंडक लाइन में चलते हैं, यहीं पे चलते हैं। और मैं यूजर्स कर लेता हूँ, इसको गेट कर लेता हूँ। सचिन, प्रकाश, सुनील, मंकी डी, लोफी। आई एम गेटिंग दिस, और देयर आई एम गेटिंग एन एरर। registration error is response, duplicate key pattern is mobile number, you don't have key pattern mobile, the request is denied। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ जाते हैं। डोंट वरी, I'll solve this. Oh, okay. So this is your error message. Request is denied. Okay. Okay. Request is denied. आई थिंक मैंने सचिन पांडे से ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, सही प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ऐसे, MMY सेमी पांडे, ऐसे MMY @123, ये हटाते हैं, क्लिक करते हैं, 200 responses mobile। I'm tired, बट काइंडली लाइक बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अभी हम रिस्पॉन्स तो कर पा रहे हैं। एड्रेस को मिस। ओए, आई एम गेटिंग, नींद आ रही है मुझे। पेलोड भी मैंने सही भेजा हुआ है, रिस्पॉन्स में आई एम गेटिंग E110 की पैटर्न मोबाइल, की वैल्यू मोबाइल की नल आ रही है। ओके, लेट्स सी। मोबाइल तो इधर है ही नहीं।
Oh man, we'll have to figure it out. So that's gonna be in the second video where I'll explain you how to do the login, how to redirect to the admin page, home page. If you're registered and if you're not registered, देखो अगर तुम registered नहीं हो तो you cannot log in. But if you are registered तो तुम directly log in कर सकते हो. नीचे बटन रख देंगे कुछ और हम ट्राई करेंगे. तो अभी मैंने सिखाया कि किस तरीके से हम फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते हैं. एपीआई कॉल होती है सिंपली. देयर इज सम माइनर मिस्टेक आई हैव टू फाइंड इट. आई एम रियली फीलिंग स्लीपी. सो या, थैंक यू. सी यू लेटर. So let's get started and let's understand how we're gonna do the connection between front end and back end. So I'll basically run our back end, right? This is the back end. ये बहुत छोटा होने वाला है, थोड़ा फास्ट भी होगा, ठीक है. I have everything. So basically what I'm gonna do is I'm gonna run this one npm run start, ठीक है. Okay, now we'll go to our चलते हैं इसको फ्रंट एंड को खोलते हैं कोड के साथ. इसका देखते हैं, इसको हटाओ, नया खोलोगे. Okay, and new one will have definitely you call it. Okay, and let's see. Post form data. हाँ सिंपल है. तो ये बोल रहा है कुछ गड़बड़ कह रहा है. यार I don't get it. Okay. Oh man, there are three problems. Let's see. Used cannot. Okay. Now let's go to the registration word unknown one. Registration. Fine है ना? npm sender. Each project start हो गया, ठीक है. और you see here, oh man, it's too bright. ये रजिस्टर का फॉर्म आ गया था. इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं. मैं सैमुअल once I click on this one, it is saying failed, right? Let's try to understand why. Okay, let's debug this together, right? Payload is coming probably. Response is errors, okay. So shown except what could be the issue? Etc type failed. Net error underscore connection refused. Okay, so connection को refuse कर दे रहा. connection refuse कर रहा है.
You go to the backend and start. Okay. So port 3000 51723 यहाँ पर आएंगे. Click on register. So this got successful. So what it is saying? Okay. Responses. Let's understand what this says. चाहे नहीं. Chat. What does it mean? Okay, so it is saying duplicate key, error collection, test users, mobile_1. Duplicate key है. Okay. Solution. Allow. Oh. Okay. Okay, so मैं क्या करता हूँ? I have one solution. Mongo टीवी का क्लाउड जाते हैं. Okay. There's a one way to solve this. I know what's the way. Because before we had mobile also. Okay. So I'm gonna select project. So to enter backend. So now let's go to the database and browse collection. Okay. Then we have users. Delete. 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 Okay. And delete. So we don't have anything, right? Now we can go and make one register. We have already this Samuel Sam at the 23 gmail.com. So I've got this registration now. The user is saved successfully. The response is done. Payload is proper. Now if I hit this again, so you have an error. Having a response, the user is already accessed. Okay. Now एक चीज और देखते हैं. मैं एक और यूजर डालता हूँ, रजिस्टर करवाता हूँ. तो अभी मैं करवाता हूँ अच्छे से. आपका नाम सचिन पांडे. सचिन पांडे @gmail.com. SSCHIMPANDY. ठीक है. फुल फॉर्म रहेगा सचिन पांडे समथिंग. ओके. What it could be? Why this error is coming? The request is denied. I got this. So okay. Okay. Let's see. Is there any way we can resolve this? Uh,
Okay, and will pass the registration part. Okay, so we'll ask ChatGPT properly. Hey, dude, we have this registration. Why? Okay, it might help. Okay, okay. So he wants me to include a mobile field, but I don't want to include a mobile field. Is there any way I parse is equal to true? हमें देखना होगा. Okay, so we'll go to our server.essential.backend.js. User model, we don't have anything called mobile here. Do we have? No, right? Okay. Server, we don't have. Name, email, and password we have. And am I setting mobile as a null? देखो प्रॉब्लम तो मुझे कुछ दिख नहीं रही. ठीक है. मोबाइल में शिफ्ट करता हूँ. शिफ्ट है मोबाइल. Okay, we have something. So create user which has mobile in it, but the user is successfully created. So when I created a users, so that means simply a registration of users, right? So okay, it shouldn't be calling this one. Password or we don't have a mobile in the whole document, right? चलो अब चलते हैं. But इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था. This is response. We still have a duplicate key. Key pattern is mobile. Okay, so I'll just give it this one. Now this is gonna be. This is irritating me. Hey bro, this is this. User not this. This, and we don't have something kind of a registration. This also in the front end. In front end, this is okay. Has an index of the mobile field. Application trying to insert document mobile is null. Provide schema code. No mobile field is the user correct. Index on is consistent. Since the mobile field is not defined, your current schema, it might be the index on mobile from previous schema. Okay. Okay. Endpoint that is proper. Okay, so what we can do is this one. Okay, this is gonna be once. So yeah, sure. We'll resolve this issue. Wait. Okay.
सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने पहले मोबाइल करके बनाया था, ठीक है, मोबाइल वन समथिंग समथिंग कुछ भी बनाया था, और अब वो प्रॉब्लम दे रहा है। आई थिंक मोंगोडीबी जो है वो क्या बोलता है कि मोबाइल फील्ड उसको चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मोंगोडीबी के स्कीमा को अपडेट कर सकते हैं। इंडेक्स कॉन्फ़िगरेशन जो है कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, होने चाहिए। तो मोबाइल फील्ड डिफाइंड नहीं है करंट स्कीमा में, तो डेटाबेस में हमारे पास क्या पता है इंडेक्स हो, तो हम रिमूव करेंगे, चेक करेंगे और रिमूव करेंगे। तो चेक करेंगे कि हमारे पास कोई यूजर्स की इंडेक्सेस है बिफोर, ठीक है। तो लेट्स चेक mongoose डॉट कनेक्शन वंस, ये काम करते हैं, ठीक है। अभी ये हमको यूज करना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपने बैकएंड में जाते हैं। बैकएंड में यहीं पर mongoose डॉट कनेक्शन मेरा कहीं पर है। आई थिंक आई कैन यूज दिस हियर। ओके, सो कोई इशू आ रहा है क्या? mongoose इंस्टॉल्ड है? नहीं है। mongoose from mongoose, लेट्स सी डेटाबेस रन करता नहीं करता। दैट इज रनिंग। सो बेसिकली यू सी, ये आया, देखो मोबाइल बन करके दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसको ये खोलता हूँ, तो तुम्हें दिखना चाहिए यहाँ पर एक इस तरीके से सारे इंडिसेस बिफोर, इतना इतना, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है। तो ये किस लिए है? आई डोंट वांट, ठीक है। तो मुझे ये दो इंडिसेस हटानी है। आफ्टर के बाद भी मेरे पास नेम करके आ रहा है, और नेम की वैल्यू आईडी है। ओके, मैंने रन कर दिया और ये आई थिंक काम कर गया, ठीक है। तो लेट्स सी, हम फिर से वही करते हैं, यहाँ जाते हैं, रिमूव करते हैं। मैंने क्लिक किया, एपीआई कॉल फेल्ड बोल रहा है। ओके, इसने एरर दे दिया, सॉरी। डुलेस और डेटाबेस इज रनिंग, ओके, click on this. So register is successful. Responses, you have entered the new user. Now if I click on this again, the user is already exists. There is no message. Now it is saying कि मोबाइल हमारा एक्सेस करता है। तो देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। अब बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ एक ही बार रन करना था, ठीक है। तो हुआ क्या है, इंडेक्सेस लिया है, अवेट किया है, mongoose कनेक्शन डीबी के कलेक्शन, यूजर्स के कलेक्शन लिए, ठीक है, इंडेक्सेस बिफोर आ गए। हाँ, हमने ड्रॉप किया मोबाइल वन करके। अब हमारा जो इंडेक्स था उसका नाम था मोबाइल वन, अगर तुम देखो यहाँ पर, तो परसों तो वन आ गया। वी हैड मोबाइल वन राइट, या दिस वन, ओके। एंड अब आई अपडेटेड द collection collections, okay, I dropped that index, then I can do the connection close. So if I remove this now, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी अब, ठीक है। सबमिट, एग्जैक्टली सेइंग सचिन पांडे। अब यहाँ पर एक और यूजर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश करिया, और प्रकाश @gmail.com, and Prakash. So the user is saved successfully. We cannot see the password. Okay, we definitely can't see the password. I have to remember the password, or else it'll be gone. Okay, now registration is successful. So once the user is registered properly,
So once the use, okay, we don't need backend now. We need a front end. Okay. And now, if we don't need any front end, okay, how are we gonna resolve the issue or that this one? So once you see the response, the form submitted, okay, form submitted will give me the message the user is saved successfully. Okay. Okay. And for the failure part, it says, okay, let's see, duplicate issue, form submitted successful. ठीक है, और इसको देखते हैं। यहाँ पे स्टेटस टोकन फॉल्स आएगा हर बार, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस वाले टर्म पे हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट करेंगे। और नेविगेट, अब देखो, नेविगेट करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है, कॉन्स्ट। यूज नेविगेट, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है, रिएक्ट ऑटोडॉम से। तो हम सिंपल नेविगेट लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, स्लैश लॉगिन। अगर उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है तो स्लैश लॉगिन पे जाते हैं, वरना हम यहाँ जाएंगे, स्लैश रजिस्टर पे जाएंगे। ओके, लेट्स गो टू द राउटर्स नाउ। दिस इज राउट्स, register, and login. Do we have a registration? Yes, we have a registration. Registration, and we need here login. Login.tsx, RFC, and in the routes, we'll go to the login. Okay, तो स्लैश करके register here, so we'll register. One day at the rate. So it is throwing a false. So it is keeping me here. Response dot message. अब ऐसा करते हैं, रजिस्ट्रेशन में सर तो कंसोल वगैरह, लेकिन स्टार्ट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज मेरा यहाँ पर आएगा, तो ये फेल हो जाएगा। तो हम अलर्ट करेंगे, द यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ओके, तो I'll click on this. Okay. Now I'll just write okay, so I'll click on submit. It is registered and it is the redirect login page. Yes. Okay, so what we did and what we didn't did it, that was proper. और आज हमने लॉगिन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। लॉगिन पेज पे जाके यूजर लॉगिन करेगा, और
Okay, we have already a login one. Okay, so and we'll go here and we'll only do by email and password. Okay. Okay. तो लॉगिन के लिए मुझे टेलविन यूज करते हैं। ठीक है, लॉगिन में ट्राई करते हैं। आई हैव नॉर्मल बेसिक लॉगिन कैसे बनाना दिखाता हूँ। वी नीड लॉगिन एक्जेक्टली। ओके, ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। यस, सो once I do the login, okay, I'm gonna do what? Uh, this. Okay, so what is this? I'll explain you. फॉर्म डेटा में ईमेल और पासवर्ड चला जाएगा। ये रहा ईमेल पासवर्ड। नेविगेट ये रहा। ट्राई कैच ये रहा। डैशबोर्ड की जगह मैं होम रख देता हूँ। ठीक है, स्लैश पे रख दूंगा तो चलेगा। इनवैलिड पासवर्ड क्या लटा जाएगा। ये रहा कुछ इस तरीके से। चलो चेक करते लॉगिन कैसे दिखता है। ये रहा हमारा लॉगिन। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा SSHN sachin@gmail.com। तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड प्लीज ट्राई अगेन। shivam@gmail.com। शिवम, परफेक्ट। सो आई वेंट टू माई होम पेज। ओके, सो मुझे यहाँ से होम पेज से रजिस्ट्रेशन को हटाना है। वी डोंट नीड रजिस्ट्रेशन, राइट। अब इनको प्रॉपर वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन पेज पे। मैं नया यूजर डालता हूँ, ठीक है। कोडिंग में कोडिंग कोडिंग विथ पांडे जी @gmail.com। I did a submit. It is registered. Okay, now the user is logged in. I've got the token. ठीक है, मुझे टोकन मिल गया। अब मैं इस टोकन का करूंगा क्या। ओके, अब आज नहीं पे खत्म करें। यस, आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। तो हमने प्रॉपर्ली क्या किया, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फ्रंट एंड से कनेक्ट, और वो जो एरर आया था उसको रिजॉल्व किया। हाँ, उसे थोड़ा टाइम लगा दे। These kind of error you'll have to debug, you'll have to find, you'll have to think, and that what makes you developer. Okay, bye.